हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज डीसी बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स। सो बायसिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल वोल्टेज टू अ ट्रांजिस्टर so that we can get an appropriate operating point which lies in the active region. Now for the DC biasing of transistors, we should have the knowledge of both DC and AC response of a system. DC and AC analysis can be done separately and the construction of network is very important. अब we know this thing that हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है that operates in three regions. The first one is active region, the second one is saturation region and the third one is the cutoff region. एंड वी नो दैट अगर हम चाहते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर बिहेव करे सो इट शुड बी वर्किंग इन द एक्टिव रीजन। एंड यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं हमारा एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। सो हेयर वी हैव अ डायग्राम फॉर आवर कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर वेयर VBE is the input voltage, VCE is the output voltage, VBB and VCC are the biasing potentials, IB is the input current and IC is the output current. अब बात करें हम लोग एम्पलीफिकेशन की, so let us assume that we have our input signal as a sinusoidal signal. Now in case of output, we want that the signal should be amplified and there should be no distortions or no clippings. Now let us talk about the operating point. So since we know that in case of transistor, हमारे पास दो transistors connected होते हैं एक दूसरे से. So we are going to have two types of operating point here. The first one is known as the input operating point and the second one is known as the output operating point. अब बात करें हम लोग इनपुट ऑपरेटिंग पॉइंट की, सो लेट अस से वी हैव आवर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ एंड वहां पे हमने अपनी लोड लाइन मार्क करी है. सो एट एनी पॉइंट व्हेन आवर लोड लाइन एंड द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द क्यू पॉइंट और द ऑपरेटिंग पॉइंट. तो यहाँ पे जो हमारे पास सर्किट है, इन द इनपुट रीजन वी आर गोइंग टू अप्लाई KVL एंड वी विल हैव द इक्वेशन एज VBB minus IBRB minus VBE is equal to 0. Now we know that जो हमने प्लॉट किया है हमारा y axis पे we have our IB and in the x axis we have our VBE. Now we need 2 points. So let us take the first case that is when VBE is equal to 0. So यहाँ पे हमारे पास IB की वैल्यू आ जाएगी which is equal to VBB by RB and हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा which is 0, VBB by RB. अब लेते हैं हम लोग हमारा सेकेंड केस when IB is equal to 0. So from this we will have the value of VBE is equal to VBB and our second point is going to be equal to VBB comma 0. Now we are going to plot both these points and we are going to join them. So this is going to be called as the load line and this point पे हमारी load line and the curve are intersecting. That point is known as the Q point. अब यहाँ पे अगर हम लोग हमारी voltage को increase करें तो हमारा ग्राफ लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेगा and if we decrease the voltage तो हमारा ग्राफ राइट साइड पे शिफ्ट करेगा. सो वी हैव आवर स्लोप विच इज इक्वल टू -1 by RB. तो अगर हम लोग यहाँ पे हमारे RB की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो लोड लाइन है दैट इज गोइंग टू शिफ्ट डाउनवर्ड्स एंड अगर हम लोग RB की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो हमारा लोड लाइन इज गोइंग टू शिफ्ट अपवर्ड्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आउटपुट ऑपरेटिंग पॉइंट. सो हियर वी हैव आवर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू अप्लाई द KVL इन द आउटपुट पार्ट ऑफ द सर्किट. सो वी विल हैव द इक्वेशन एज VCC माइनस ICRC माइनस VCE इक्वल टू, जो कि हमने इनपुट के केस में करी थी. सो पुटिंग VCE इक्वल टू 0 वी विल हैव द वैल्यू ऑफ IC एज VCC by RC एंड पुटिंग IC इक्वल टू 0 वी विल हैव द वैल्यू ऑफ VCE एज VCC. सो हम लोग यहाँ पे अपने ग्राफ को प्लॉट करने वाले हैं एंड हेयर जब हमारी लोड लाइन बन जाती है, one thing that we have to remember that we can see यहाँ पे multiple हमारे intersections take place कर रहे हैं, but we always take the mid value. अब ये ऐसा क्यों होता है? We are going to see that in the next slide. So यहाँ पे हमारे पास output characteristics curve ही है and here we can see that we have our load line 1 and load line 2 and एक point Q1 हम यहाँ पे assume कर रहे हैं and एक point Q2 हम लोग यहाँ पे assume कर रहे हैं. Now हम बात करें अगर हमारे amplification के time की, so here we have drawn some dotted lines एंड जब हम लोग एम्पलीफाइड सिग्नल बना रहे हैं सो यू कैन सी दैट हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज गोइंग ग्रेटर देन इक्वल टू VCC. तो उस वजह से क्या होगा दैट जो हमारा अपर पार्ट है दैट इज गोइंग टू गेट क्लिप्ड, जो कि हम लोग नहीं चाहते हमारे एम्पलीफिकेशन के केस में. सिमिलरली अगर लोड लाइन 2 की बात करें हम लोग एंड यहाँ पे जो हमने पॉइंट Q2 लिया है, तो जब हम इसका एम्पलीफिकेशन वाला पार्ट बनाते हैं
सो यू कैन सी दैट वो हमारा नेगेटिव रीजन में ज्यादा जा रहा है, ड्यू टू विच द नेगेटिव पार्ट इज गोइंग टू गेट क्लिप्ड, जो कि हम लोग नहीं प्रेफर करते। सो दिस इज द ओनली रीजन कि आउटपुट ऑपरेटिंग पॉइंट के केस में हम लोग हमेशा मिड वाले ऑपरेटिंग पॉइंट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। एंड इन द केस ऑफ मिड यू कैन सी दैट देयर इज नो साइन ऑफ क्लिपिंग। अब एक और पॉइंट जो ऑपरेटिंग पॉइंट से रिलेटेड आता है, दैट कलेक्टर करंट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट। एंड कलेक्टर करंट चेंज होने के दो पैरामीटर्स हैं। तो द फर्स्ट वन इज चेंज इन बीटा एंड द सेकेंड वन इज चेंज इन टेम्परेचर। सो बीटा की अगर हम बात करें, सो वी नो दैट आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी। एंड अगर हम लोग बीटा की वैल्यू को बढ़ा देंगे, हमारा आई सी दैट इज द कलेक्टर करंट विल गोइंग टू बी चेंज्ड। सेकेंडली हम लोग बात करें हमारे चेंज इन टेम्परेचर की, सो वी नो दैट आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी प्लस बीटा प्लस 1 टाइम्स आई सी बी ओ। नाउ वी नो दैट द रिवर्स सैचुरेशन करंट is present due to the minority charge carriers and the minority charge carriers are dependent on temperature। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो ड्यू टू विच हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा, ड्यू टू विच हमारा कलेक्टर करंट इंक्रीज हो जाएगा। सो इन केस ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट it is necessary to take the charge of collector current. So that was all for this video and I will see you in the next one.